बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी आज की जो वीडियो है वो है कैम्ब्रिज आइल्स लिसनिंग टेस्ट के बारे में। और आज की जो वीडियो है वो होगी क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक, जो कि लिसनिंग टेस्ट का पार्ट 4 है। तो सबसे पहले आपने जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लेनी है। और इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ है कंप्लीट द नोट्स बिलो, राइट वन वर्ड ओनली फॉर ईच आंसर, कि आपने हर सवाल के जवाब में सिर्फ एक वर्ड लिखना है। इसके बाद टाइटल है हाउ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अफेक्टेड लाइफ इन ब्रिटेन, के इंग्लैंड में सनती इनकलाब ने जिंदगी को कैसे मुतासर किया है। तो टाइटल में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो कीवर्ड है और अफेक्टेड लाइफ इन ब्रिटेन जो है कीवर्ड है। अब लिसनिंग टेस्ट में जो 95% जो राइट आंसर्स आपके होंगे वो आपके ब्लैंक से पहले वाले वर्ड्स के हिसाब से या ब्लैंक के बाद वाले जो वर्ड हैं उनके हिसाब से होंगे। यानी कि अगर आप ब्लैंक से पहले वाले वर्ड्स को अच्छी तरीके से समझते हैं और ब्लैंक के बाद वाले वर्ड्स को आप अच्छे तरीके से समझते हैं तो आपके जवाब तकरीबन 95% ठीक होने के चांस है। इसके बाद जो हमारे पास हेडिंग है वो है 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी के हवाले से क्वेश्चन नंबर 31 और क्वेश्चन नंबर 32 हैं, यानी कि 2 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 है फॉर द फर्स्ट टाइम पीपल्स पोसेशंस वर यूज्ड टू मेजर ब्रिटेन्स ब्लैंक, कि पहली बार लोगों की जो जायदादें थीं वो इस्तेमाल की गई टू मेजर ब्रिटेन्स, इंग्लैंड की किसी चीज़ की पैमाश के लिए, इंग्लैंड की किसी चीज़ को जांचने के लिए। अब आप देखें कि ब्रिटेन्स के साथ एपोस्ट्रॉफी लगाकर एस लगा दिया गया है, जिसका मतलब है का या की, और इंग्लिश में इसके लिए ऑफ का वर्ड यूज़ करते हैं। तो इट मीन्स जो ब्रिटेन्स का हम मानी होगा वो ऑफ ब्रिटेन होगा या ऑफ कंट्री होगा। तो ऑफ ब्रिटेन या ऑफ कंट्री से पहले वाला जो वर्ड है वो हमारा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसके बाद डेवलपमेंट्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड इन ब्लैंक ग्रेटली चेंज्ड लाइव्स। तो डेवलपमेंट्स इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के मुख्तलिफ चीज़ों की पैदावार में जो बेहतरी आई है, एंड जो है वो की वर्ड है, क्योंकि एंड का हम मानी जो है वो लिसनिंग टेस्ट में यूज हो सकता है एज वेल एज। इसके बाद इन पर आपने गौर करना है, इनके बाद जो वर्ड होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 32 का जवाब होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है मेन एरियाज ऑफ चेंज, और इसके बाद है मैन्युफैक्चरिंग। The Industrial Revolution would not have happened without the new types of blank that were used then. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है वो कीवर्ड है। दी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाजमी आप लिस्टिंग में सुनेंगे। इसके बाद आप नॉट को ट्रैक आपने करना है, नॉट का वर्ड लाजमी होगा। और इसके बाद जो हैपेंड के लिए जो सिनोनिम यूज़ किया जाएगा वो वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी, और इसी तरह वुड के लिए जो सिनोनिम यूज़ किया जाएगा वो भी वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी। विदाउट द न्यू टाइप्स, न्यू का वर्ड इसका हम मानी लेटेस्ट हो सकता है, मॉडर्न हो सकता है। टाइप्स का कोई सिनोनिम होगा और वो सिनोनिम भी प्लूरल फॉर्म में होगा, यानी कि न्यू टाइप्स ऑफ ब्लैंक, यानी न्यू के बाद सिनोनिम होगा टाइप्स का, इसके बाद ऑफ बोला जाएगा और ऑफ के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का जवाब होगा। इसके बाद दी लीडिंग इंडस्ट्री है। तो दी लीडिंग इंडस्ट्री लाजमी जो है वो लिस्टिंग में आप इसको सुनेंगे। दी का जो लेटर है या वर्ड है सारी वो आप लाजमी सुनेंगे। ये दी जो आर्टिकल है ये लाजमी आप सुनेंगे। लीडिंग की जगह इसका सिनोनिम होगा। इंडस्ट्री का वर्ड लाजमी आप सुनेंगे। इसके बाद वाज होगा और ब्लैंक फिर आएगी। तो ये क्या है, द लीडिंग इंडस्ट्री वाज, यानी सबसे ज्यादा तरक्की करती हुई इंडस्ट्री थी। इट मींस क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब जो होगा वो इंडस्ट्री का नाम है, क्योंकि इसके बाद आप देखें इट्स लिखा हुआ है। तो इट्स का जो वर्ड है वो इसलिए लिखा गया है कि बार बार वो नाम को नहीं लिखना चाह रहा या नाम को नहीं बोलना चाह रहा लिसनिंग टेस्ट में। तो इट मींस इट्स जो है यहाँ पर दिए गए जवाब को रेफर करेगा और वो जवाब क्या होगा, नाम होगा। इट्स प्रोडक्ट्स बिकेम वाइडली अवेलेबल। इसके बाद आपने न्यू का वर्ड जो है उसको टारगेट करना है लिसनिंग में। न्यू के बाद क्वेश्चन नंबर 35 का जवाब होगा। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ मेड, तो लिसनिंग टेस्ट में जो मेड का सिनोनिम होगा वो भी वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी। फैक्ट्रीज का वर्ड आप सुन सकते हैं, नेसेसरी का वर्ड सुन सकते हैं, एंड का वर्ड आप लाजमी सुनेंगे। एंड की जगह एज वेल एज हो सकता है या एंड हो सकता है।
सो मोर पीपल मूव्ड इनटू द टाउन्स, तो मूव्ड की जगह पर भी लिसनिंग टेस्ट में वर्ब की दूसरी फॉर्म होगी, जैसे मूव्ड की जगह हो सकता है माइग्रेटेड हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो है ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट पर लिखा हुआ है दी रेलवेज टुक द प्लेस ऑफ कैनल्स, कि रेलवे ने कैनल्स की जगह ले ली। इट मीन्स रेलवेज जो थे वो कैनल्स की जगह इस्तेमाल होने शुरू होगी। बिकॉज ऑफ द न्यू ट्रांसपोर्ट ग्रेटर एक्सेस, इसका हम मानी आपने ट्रैक करना है। इसके बाद आपने टू को टारगेट करना है और टू के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब होगा। मेड पीपल मोर अवेयर, और वो जो हमारा जवाब है जो कि एक नाउन है, उसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बाखबर हो गए। मेड पीपल मोर अवेयर, इस तरह पीपल की जगह पब्लिक हो सकता है। मोर अवेयर मीन्स नॉलेजेबल, दे गॉट नॉलेज, इस तरह की वर्डिंग आप लिसनिंग टेस्ट में सुनेंगे। व्हाट दे कुड बाय इन शॉप्स। इसके बाद है व्हेन शॉपिंग पीपल वर नॉट लिमिटेड टू बाइंग ब्लैंक गुड्स, जब शॉपिंग करते थे तो लोग किसी किस्म की चीज़ों की खरीदारी तक महदूद नहीं थे। तो यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड लगेगा जिसमें यह कहा जाएगा कि लोग जब शॉपिंग करते थे तो वो किसी किस्म की चीज़ों तक महदूद नहीं थे, मतलब कि उनकी शॉपिंग जो थी वो बहुत वाइड रेंज थी। तो यहाँ पर जो है ऐसा नॉन लगेगा जो कि लोगों की खरीदारी को जाहिर करेगा कि लोग सिर्फ उस हद तक खरीदारी नहीं करते थे। इसके बाद रिटेलिंग, द फर्स्ट डिपार्टमेंट स्टोर्स वर ओपन, द डिस्प्लेज ऑफ गुड्स वर मोर विजिबल इनसाइड स्टोर्स बिकॉज ऑफ बेटर। तो बेटर के वर्ड को आपने टारगेट करना है क्योंकि ये ब्लैंक से पहले है। इनसाइड स्टोर्स की वर्ड है, तो बेटर क्या हम मानी हमने यहाँ पर तलाश करना है लिसनिंग टेस्ट में, और उस हम मानी वर्ड के बाद क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब होगा। आउटसाइड स्टोर्स को टारगेट करना है बिकॉज ब्लैंक वर बिगर। अब यहाँ पर जो जवाब होगा वो प्लूरल होगा क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब यूज किया गया है। इसके बाद बिगर का हम मानी हो सकता है, बिगर का हम मानी हो सकता है लार्जर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है दैट वाज परस्यूसिव, इट मींस यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज यूज किया गया है, तो हमारा जवाब जो होगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। बिकेम मच मोर कॉमन, यानी जो हमारा जवाब है, जो सब्जेक्ट में हमारा जवाब आएगा, यानी कि वो जो ऐसा नाउन है जो कि बहुत ही ज्यादा क्या हो गया, आम हो गया। इट मींस वाइड रेंज पर वो यूज किया जाता था, बहुत वसी पैमाने पर वो यूज किया जाता था। तो फिर इस तरह हमने बिकेम मच मोर कॉमन का हम मानी जो है वो तलाश करना लिस्टिंग में, और उसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 40 का जवाब अटैच होगा। स्टार्ट। सबसे पहले हम सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करेंगे और फिर टेस्ट सॉल्व शुरू करेंगे। That is the end of part 3. You now have 30 seconds to check your answers to part 3. Part 4. You will hear a history student giving part of a presentation about changes in British society in the 19th century. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Hi everyone. In this session, I'll be presenting my research about the social history of Britain during the Industrial Revolution.
I particularly looked at how ordinary lives were affected by changes that happened at that time. This was a time that saw the beginning of a new phenomenon, consumerism, where buying and selling goods became a major part of ordinary people's lives. In fact, it was in the 19th century that the quantity and quality of people's possessions was used as an indication of the wealth of the country. Before this, the vast majority of people had very few possessions, but all that was changed by the Industrial Revolution. This was the era from the mid-18th to the late 19th century, when improvements in how goods were made, as well as in technology, triggered massive social changes that transformed life for just about everybody in several key areas. First, let's look at manufacturing. When it comes to manufacturing, we tend to think of the Industrial Revolution in images of steam engines and coal. And it's true that the Industrial Revolution couldn't have taken place at all if it weren't for these new sources of power. They marked an important shift away from the traditional watermills and windmills that had dominated before this. The most advanced industry for much of the 19th century was textiles. This meant that fashionable fabrics and lace and ribbons were made available to everyone. Before the Industrial Revolution, most people made goods to sell in small workshops, often in their own homes. But enormous new machines were now being created that could produce the goods faster and on a larger scale, and these required a lot more space. So large factories were built, replacing the workshops and forcing workers to travel to work. In fact, large numbers of people migrated from villages into towns as a result. As well as manufacturing, there were new technologies in transport, contributing to the growth of consumerism. The horse-drawn stagecoaches and carts of the 18th century, which carried very few people and goods and travelled slowly along poorly surfaced roads, were gradually replaced by the numerous canals that were constructed. These were particularly important for the transportation of goods. The canals gradually fell out of use, though, as railways were developed, becoming the main way of moving goods and people from one end of the country to the other. And the goods they moved weren't just coal, iron, clothes, and so on. Significantly, they included newspapers, which meant that thousands of people were not only more knowledgeable about what was going on in the country, but could also read about what was available in the shops, and that encouraged them to buy more. So faster forms of transport resulted in distribution becoming far more efficient. Goods could now be sold all over the country instead of just in the local market. The third main area that saw changes that contributed to consumerism was retailing. The number and quality of shops grew rapidly, and in particular, small shops suffered as customers flocked to the growing number of department stores, a form of retailing that was new in the 19th century. The entrepreneurs who opened these found new ways to stock them with goods and to attract customers. For instance, improved lighting inside greatly increased the visibility of the goods for sale. Another development that made goods more visible from outside resulted from the use of plate glass, which made it possible for windows to be much larger than previously. New ways of promoting goods were introduced too. Previously, the focus had been on informing potential customers about the availability of goods. Now, there was an explosion in advertising trying to persuade people to go shopping. Flanders claims that one of the great effects of the Industrial Revolution was that it created choice. All sorts of things that had previously been luxuries, from sugar to cutlery, became conveniences.